मैं ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहूँ जो रियलिस्टिकली ऐसा लगता नहीं है कि पॉसिबल है। तो फिर जैसे अभी मैं आपने अंबानी जी का एग्ज़ाम्पल दिया, मैं कल मैनिफेस्ट करूँ कि मैं अंबानी बन जाऊँ या उनकी वेल्थ मेरे पास आ जाए, या मैं कोई सेलिब्रिटी हो गई, कोई हॉलीवुड की सेलिब्रिटी है, उनके साथ मेरी शादी हो जाए, उनके साथ मेरी रिलेशनशिप हो जाए। मैंने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर दिया जो प्रैक्टिकली अभी जो मेरी सिचुएशन है उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। तो फिर वो मैनिफेस्टेशन मैंने टेक्निक भी सही की, सब कुछ सही किया, तो फिर वो ऐसे मैनिफेस्टेशन का क्या रिजल्ट होता है? So, for Mr. Ambani to reach that level, or for a celebrity to reach that level, ठीक है, उनके पास क्लैरिटी थी, उनके पास सोच थी, उनके पास बिलीफ थी, पर उनके साथ वो हार्ड वर्क भी था, वो वर्किंग करना उन्होंने नहीं छोड़ा। What people, the myths is कि यार ये मैंने बोल दिया ये हो जाएगा, but you still have to do your karma, you still have to do your hard, you still have to do your work. I wouldn't say hard work, because hard work भी एक तरह का वही हो गया ना माइंड में कि अगर हार्ड वर्क करोगे तो ही कुछ मिलेगा. हुँ, You हुँ। have to work towards it. You have to do your act. You have to do your karma in order to reach where you have to reach. And at the same time, to keep your mind and your conscious completely clear, with belief, with clarity, then that thing would work very well. ये मैंने सोच लिया कि यार बैठे-बैठे कुछ किए बिना कि मुझे ये मिल जाए, वैसा नहीं होता। नहीं होता. Okay, but if you have that belief and if you also work towards it, 100% your roads will open. The universe will only open things for you. यहाँ मैंने सोचा कि अब मुझे एक पॉडकास्ट करना है. I want my voice to go out to people so that people can get motivated. This is my thought process in my heart. This is my intention towards doing this podcast. The universe will make it happen. What is your intention? How is your intention? How is it helping your soul? How is it helping for your consciousness to grow? How is it helping for the people who are in touch with you? हुँ, See, everything is a sangha. I may meet somebody for the first time, but still my soul, still my higher self is always connected to that person. We have different bodies. We have different, the way we look is different. We have different bodies. ये सब अलग 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 है. But जो एक spirit से spirit का connection है. When I say spirit is the soul. या ऑफ When कोर्स। it's a soul to soul connection. See, that is all one in the end of the day. So that is why, in the end of the day, all of us are connected with one another. Why only certain people have come here and making this podcast possible? हुँ, Why not other people? See, because this is all what we are connected with. Everything is connected करेक्ट। eventually. So that's how it is. सो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज़ व्हाट आई सेड कि अगर कोई मैनिफेस्ट कर ले बैठे-बैठे और वो नहीं होता, तो आई थिंक इसका आपके जो बोलने का तात्पर्य जो बोलते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि अगर कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो वो बैठे-बैठे रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, See, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि हार्ड वर्क. एज़ इन नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट, ब कुछ कर ही नहीं रहा है। हाँ, अगर मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, ऐਵੇਂ ही बोल रही हूँ, I'm just sitting here and हाँ, speaking. तो फिर वो मैनिफेस्टेशन भी नहीं हुआ शायद। Right. इट्स नॉट इवन एक्चुअल That मैनिफेस्टेशन, is यू just वांटेड। me speaking affirmations. That is just me wanting things superficially, but not wanting things, making my physical, making my mental, making my emotional being all together. See, हुँ। all of this are connected with each other. Correct. I Right. think a good example to present this would be that if 10, 15 people are like working towards one thing and they really are putting in their heart and soul into it, and if one person out of that can manifest it correctly, then he's more likely to get it than the other 14. If all 15 have done the same amount of work, then Hmm. what would differentiate them is कि कौन ज़्यादा शिद्दत से वो चीज़ को मांग रहा है. I think that's what the essence is of what you're I wouldn't say कौन ज़्यादा शिद्दत से या कम शिद्दत से है. मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ that if I have this goal today, that like I have my goal that मुझे मेरी गौशाला खुद की बनानी है. I love Okay. cows. It's your goal. It's my goal. I love Wow. cows. I love animals. मुझे Yeah. बहुत पसंद है animals. Okay. Okay? No matter what, whether my day goes good, whether my day goes not good, there are moments which are very high in energy. There are moments I feel that I am good, but I need my space off. But वो मेरी अंदर की feeling कि मुझे वो गौशाला तो बनानी है, is that strong enough? Then the roads will also open for it. They will open for it.